Hello to class 12 students. Today we will study about combination of resistors. First is resistors in series. Like in capacitor, we had studied series and parallel combination. Similarly, we will study resistors in series and resistors in parallel. Resistors in series, you can see in the figure R1, R2, R3, they are connected in series. Here current will be same, I is flowing through full series, I current will be same, and voltage will be different, V1, V2, V3. Total voltage is V. Now you can see for a series combination of resistors, V1 will be IR1, that formula from Ohm's law, V2 will be IR2, V3 will be IR3. This three combination we are making as first equation. Then total resistance will be Rs in series resistance. That equivalent resistance we have to calculate using this derivation. This total voltage is V, total current is I current is that one point you should remember that करंट जो होगा सीरीज़ कनेक्शन में वो हर रेजिस्टर में सेम होगा सीरीज़ कनेक्शन में. तो टोटल वोल्टेज कितना होगा IRS. आई तो कॉमन रहेगा और सो टोटल वोल्टेज इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. That is, now we put the values of V1, V2, V3 in this equation. V is IRS, V1 is IR1, V2 is IR2, V3 is IR3. You take I common from here and here I also there, so they will cancel out and resultant resistance will be Rs equal to R1 plus R2 plus R3. This equivalent resistance is the combination of series resistance that you should remember. उसके बाद आएगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल. अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 रेजिस्टर्स अब हम अपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं. यहाँ से करंट आएगा दैट विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री रेजिस्टर्स. अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट अलग हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा V. voltage will be connected across this like this, so your voltage will be V. Current will be I1, I2, I3. So here again voltage is V in everywhere. R1 is resistance, R2, R3. So here voltage will be V, I1, R1. Here I2, R2 and I3, R3. So here current will be I equal to I1 plus I2 plus I3, total current. So here voltage is same, so we will use this equation to calculate the equivalent resistance. I1 will be equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3, and equivalent resistance will be Rp. Total current will be equal to I equal to V by Rp. So this value we will put here and all these values we will put here, I1, I2, I3. So resultant resistance we will get it as V by Rp is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Here V cancel out and the resultant resistance will be 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. These two conditions you must remember, that in parallel connection the reciprocals are added, in series connection direct resistances are added. Next is EMF and internal resistance. Instead of resistors, if you are connecting cells, the potential difference available across terminals of a cell in an open circuit. ये सेल है, सेल में potential difference open circuit है. Open circuit means this key is open, so your voltage is not connected, this resistance is also not connected. ओपन सर्किट में जो वोल्टेज डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. वी आर लर्निंग अबाउट EMF हियर. कंसिडर ए सेल ऑफ EMF E. यहाँ पे हमने एक सेल लिया है बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज दैट वी कॉल एज स्मॉल r. External resistance is R. No current flows when the key is open, then the voltmeter will be E. voltmeter रीडिंग, यहाँ पे जो voltmeter हमने कनेक्ट किया है उसमें रीडिंग आएगी जो कि बैटरी में EMF इंड्यूस होगा विदाउट एनी की कनेक्शन.
व्हेन द की इज़ क्लोज, अगर हम की को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द external resistance. Voltage drop will be there, that is called capital R. This is called capital R and this is called small r. The internal resistance of the cell, hence the voltage available across external resistor is the difference between EMF and voltage drop across the cell. This is the present voltmeter reading. This is called terminal potential difference. जब हम की को क्लोज करेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो टोटल वोल्टेज जो होगा दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये वोल्टेज और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल ऑपरेटिंग इन ए क्लोज सर्किट. EMF वोल्टेज, ई सेल का वोल्टेज टोटल कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू आई आर प्लस आर, that is equal to IR plus IR. IR equal to V, that is the voltage across this resistance. If we take V, that is called terminal potential difference. So E is equal to V plus IR. इसकी जगह पे V सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी E माइनस IR, that we defined as the difference between EMF and resistance, internal resistance, potential difference between the terminal of a cell operating in a closed circuit. This is the resultant. Internal resistance is defined as the opposition offered by a cell to the flow of current through it. It mainly depends on the nature of the electrolyte and the electrodes of the cell. Cell अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि उस resistance means it will oppose the flow of current and depends upon the nature. जो भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. थैंक यू.